So as I stated, electrochemistry is very easy. It's a moderate chapter and it's connected to our daily routine life. Since we enter into the science stream right from your 5th or 6th standard, we have started studying the current, electrons, conductance, conductivity. Like these are the terms what we are very familiar with right from our 5th to 6th standard onwards. So since we started studying science, we know many of the concepts which are related with this electrochemistry. There are many terminologies, many concepts we have discussed in our school life, which are related with electrochemistry. And without electrochemistry, it's simply difficult. Today's life is simply difficult without electrochemistry. Even this lecture was simply difficult without the electrochemistry. How it is? As of now, it is a very essential part of our daily routine life. That electrochemistry is the principles of electrochemistry, the applications of electrochemistry, and the devices which are made by using the principles of electrochemistry are an undividable part of our life, unavoidable part of our life. See, this lecture is possible because of the mobile. Almost everyone amongst us has the mobile, has the smart mobile, and we know it very well. Mobile needs a battery. Every mobile has a very important feature called as a mobile, a battery. So there are many electronic gadgets what we use where we need a battery cell. That may be a use and throw type of cell, or that may be a rechargeable cell. Mobile has the rechargeable cell, and it's very important function or feature of the mobile. When we buy the mobile, at that time we compare this feature. What power of this battery is there? How much milliampere this battery is delivering to us, or how much is the charging speed of the battery. So these are the modern eras. And even last year, Nobel Prize in Chemistry was awarded to the scientist from this electrochemistry who invented this lithium ion battery. And our mobile and our laptops are equipped with lithium ion battery. So that is the power of electrochemistry, what we can say over here. So जितनी सारी दुनिया में बैटरीज आते हैं, जितनी सारी दुनिया में सेल्स आते हैं, चाहे यूज एंड थ्रो के सेल्स हो, चाहे rechargeable cells हो, all these cells, all these batteries are due to the principles and knowledge of electrochemistry. It is the gift of electrochemistry. Furthermore, there are many phenomena as like electroplating, which is used in jewelry as well as precious bikes, super bikes and car, where the metal is coated or metal paint is coated over the metal chassis of the vehicle, the body of the vehicle, then gold plated jewelry, platinum plated jewelry, like that. So these are the different types of electroplating, what we say chemical language mein, chemistry language mein, that is electroplating, and that is again due to the principles of this electrochemistry again. So that's why there are many what we use, these are related with electrochemistry. All the batteries, all the cells what we use, these are due to the knowledge of electrochemistry. Even when we send any space shuttle, space missions, for that we need again batteries. वहाँ पे तो electricity का कोई सवाल आता ही नहीं है. वहाँ पे हम लोगों को कोई तो मॉडर्न तरीके के बैटरीज सेल्स भेजने पड़ते हैं स्पेस शटल के साथ, स्पेसशिप के साथ, और वहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो मोबाइल जिस तरीके से हम लोग हटा नहीं सकते, उसी तरीके से मोबाइल के अंदर से बैटरी हम लोग हटा नहीं सकते. And that's why these electrochemistry principles will give a much more insight into the daily routine gadgets what we use for here, what the principle used here in these batteries or cells. That is what we are going to discuss here in electrochemistry. Okay, I will make 3 parts here in this chapter. This chapter is divided into 3 parts. It always happens. Initial part of each and every chapter always comprises or consists of some fundamental definitions and concepts. So, electrochemistry chapter, its first section is also dealing with some fundamental definitions and fundamental concepts. These are very important in order to enter into this chapter well. So, what I will suggest everyone, initially इस chapter के अंदर जितने सारे definitions हम discuss करेंगे, जितने सारे concept discuss करेंगे, वो आपके thoroughly prepared होना जरूरी है. Or I expect that कि everyone amongst you will go thoroughly through this topic initially in first half of this chapter. जहाँ पे हम लोग what is electrochemical cell,
what is redox reaction, what is conductance, what is metallic conductance, what is electronic conductance, वगैरह वगैरह वगैरह. These are the fundamental definition. What is conductivity? What is resistance? What is resistivity? What is conductivity? What is molar conductance? What is Coulom's law? These are the very fundamental definitions what we are going to discuss initially here in this chapter. So first part of this chapter consists of all these fundamental definitions and concepts which need to be very well understood. After this, we enter into the second section of this chapter where we will discuss the core concepts of electrochemistry, core concepts, core principles of electrochemistry. So in the second half of this chapter, we'll discuss the development of electrode potential. What is electrode potential? What is the cell potential? How this potential is developed? What are the electrodes? What is the cell? How cell is constructed? What two different types of cells are there? There is galvanic cell, there is electrolytic cell. So how these cells are constructed, and what are the chemicals, what are the substances of uses, and how they works. So that is the part what we discuss here in this middle part of this chapter. So be clear, middle part of this chapter is dealing with the core concept of electrochemistry as like what are the electrodes, what is the cell, what is electrode potential, how this electrode potential is developed, what is the cell potential, what is the standard potential, what is standard electrode potential, what is standard cell potential, and how the cells are constructed. There are two different types of cells, that is, you can say galvanic linear voltaic cell or electrolytic cell. How these cells are constructed, what are the components of this cell, what are the things related with this cell, and how this cell works. That is what we discuss here in the middle part of this chapter. And after going through this, we enter into the third section of this chapter, third part of this chapter, where we'll discuss the applied part of this electrochemistry. Whatever the principles, whatever the theory we discuss here in this first or second part, that has a right applications in our daily routine life, that is in social development. So we'll study at the last the applied part of these principles of electrochemistry. That is actually the making of different types of cells. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रिंसिपल यूज करके कौन से टाइप के सेल्स हम बना सकते हैं, कौन से टाइप के बैटरी हम बनाते हैं, जनरली वो किस तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं. तो उसके अंदर प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, लेड एक्यूमुलेटर सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, मर्क्यूरी सेल क्या होता है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. उसके अंदर कौन से बेसिक केमिकल्स यूज किए जाते हैं और उनका फंक्शनिंग कैसे होता है, दैट विल स्टडी हियर इन द अप्लाइड पार्ट. एंड लास्टली we'll study given the applications of electrolytic cell here in electroplating as well as metallurgical engineering, जहाँ पे हम लोग मेटल का प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग इनके एप्लीकेशन देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी इजी पार्ट है सेल्स का, isn't it? सो अभी यहाँ पे एक मौका है हम लोगों को कि हमारे जो मोबाइल्स हम लोग यूज करते हैं या फिर हम जो टॉर्च यूज करते हैं, सबके अंदर जो बैटरीज यूज किए जाते हैं, चाहे छोटे साइज के बड़े साइज के, वो बैटरी किस तरीके से काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये सारा इस चैप्टर के थ्रू जाने के बाद हम लोगों को क्लियर होगा, समझ में आएगा. दैट इज नथिंग बट यू कैन से हियर electrochemistry. That's all for the introduction of this electrochemistry. Once again, this is a very theoretical chapter. Yes, certainly there are some numerical concepts. There are some concepts which can be converted into the numericals, and that's why there is a thermodynamic angle for this electrochemical cell. So there is certainly thermodynamic behind these principles of electrochemical cell, because there is a work, there is a energy, and that's why we have to discuss that part, because this chapter can't go ahead without the energy. और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, और we have seen the basic law. Energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted to another form. This is a law of conservation of energy, which is very forever, very fundamental law. और दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद एनर्जी. एनर्जी के साथ हमारे दो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के अंदर. पहला है वो थर्मोडायनामिक्स जो हमने देखा, और दूसरा ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम लोग एनर्जी के साथ ही जुड़े हुए हैं, और सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये उसके अंदर की खासियत है, और इसीलिए इसका थर्मोडायनामिक एंगल भी उसके सामने आता है. तो उसके कारण से कुछ न्यूमेरिकल जरूर आते हैं. एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस के एज वेल एज कंडक्टेंस के इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले आते हैं जो आपने फिजिक्स में भी देखे हुए हैं और केमिस्ट्री में, वो कुछ बदलेगा नहीं. जो फॉर्मूले हमने फिजिक्स में देखे हैं वही केमिस्ट्री में आते हैं, जो केमिस्ट्री में देख रहे हैं हम लोग वही फिजिक्स में आ जाएंगे, बिकॉज इट्स नेवर चेंजेस. ऐसा नहीं कि फिजिक्स के अंदर का रेजिस्टेंस कुछ अलग है और केमिस्ट्री के अंदर का कुछ रेजिस्टेंस अलग है. हो सकता है नोटेशन थोड़ा बहुत अलग हो,
बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा एंड उसी तरीके से रहेगा. दैट्स व्हाई जरूर इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, लेकिन थ्योरी अगर ठीक से समझ में आती है तो न्यूमेरिकल पार्ट इज वेरी इजी. हम लोग स्कूल टाइम से वो करते आए. सो दैट्स व्हाई जस्ट हमें फॉर्मुलेट करना है कि क्या इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. सो स्टार्टिंग से अगर ठीक से बने रहेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट अगर हम अच्छी तरह समझते हैं, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट विल अपीयर वेरी इजी फॉर यू. You will feel very easy while preparing this electrochemistry. Clear? So that's all for the introduction. Now we'll enter into this chapter called electrochemistry. As I stated, electrochemistry is a branch of physical chemistry where we are dealing with the conversion of one form of energy into another form of energy. One form of energy into another form of energy. And that is what we are dealing with here in electrochemistry. See now here. There are two types of energies mainly what we are dealing here. So we can say electrical energy. Electrical energy can be converted into chemical energy. And chemical energy can be converted into electrical energy. It's a reversible reaction. This is electrical energy which can be converted into chemical energy. And finally, again, chemical energy can be converted into electrical energy. It's a reversible reaction. अभी हमारे सिंपली मोबाइल की बात करते हैं तो हमारे मोबाइल के अंदर देखिए हम लोग जब उसे चार्जिंग के लिए लगा देते हैं तो चार्जिंग के अंदर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हमारे मोबाइल के अंदर केमिकल फॉर्म में स्टोर होता है. बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर केमिकल के फॉर्म में वो स्टोर होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. और हमें जब मोबाइल यूज करना होता है तो वही जो एनर्जी हमने स्टोर करके रखी है जो केमिकल एनर्जी के फॉर्मेट में, वही कन्वर्ट होती है वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हम लोग मोबाइल यूज कर सकते हैं. जिस दिन और जिस मोमेंट पे हमारा बैटरी डाउन होता है मोबाइल का, वी कांट यूज द मोबाइल. सो इसका मतलब है सिंपली हमारे मोबाइल के अंदर फंक्शनिंग क्या करते हैं हम लोग, या मोबाइल के अंदर का जो बैटरी है उस बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो डिवाइस क्या करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल central theme of this chapter, that is called electrochemistry. So electrochemistry is a chapter which is related to the energy where we convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. But now thing is that in order to convert this both of the energies, we need a device. Device के सिवा तो ये होगा नहीं, अपने आप तो होता नहीं है ना. जैसे कि मोबाइल के अंदर का बैटरी itself is a device. एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा एक डिवाइस ही बोल सकते हो उसे, जो इस एनर्जी को कन्वर्ट करता है. एंड ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो ये कन्वर्जन करने वाला जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे कहते हैं. और सेल्स के मतलब उसे सेल भी कह सकते हैं हम लोग. चलो बेटर हम थोड़ा फिर कर लेते हैं इसे. सो वी कैन से सेल. ओके, and this cell has two types, that is you can say electrolytic cell and you can say electrochemical cell. Electrochemical cell, दो टाइप के सेल्स होते हैं. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड ये जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, that is you can say electrochemical cell. दोनों सेल में जो रिएक्शन यूज करते हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन. ये देखिए दो अलग अलग सेल्स है. That is इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग होता है. हम जिस गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, हम जिस डैनियल सेल की बात करते हैं, जिस वोल्टाइक सेल्स की बात करते हैं, दिस सेल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और हम जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल. दो टाइप के सेल होते हैं. सो ये दोनों सेल्स यहाँ पे होते हैं, दोनों कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को. दोनों सेल्स के अंदर जो रिएक्शन हम यूज करते हैं, दिस रिएक्शन इज नथिंग बट रेडॉक्स रिएक्शन. याद रखिएगा, व्हाटएवर मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये आपका बहुत सेंट्रल थीम है इस चैप्टर का. ये अगर समझ में आया तो ये चैप्टर समझ में आने में कोई मुश्किल नहीं है. बस 1 to 1 हमें इंस्ट्रूमेंट याद रखने हैं, हमें डिवाइसेस याद रखने हैं और पॉइंट्स याद रखने हैं, नथिंग बट सेंट्रल थीम यही रहता है. सो दिस इज यू कैन से इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड दिस इज यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एंड वो दोनों, चाहे ये सेल की बात करें ये सेल की बात करें, उस सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है दैट इज नथिंग बट रेडॉक्स रिएक्शन. 11th स्टैंडर्ड में हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर डिस्कस किया है. 11th स्टैंडर्ड में हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को ठीक से पढ़ा भी है. सो this is nothing but the redox reaction. So redox reaction is the combination of reduction and oxidation, and this all together is called the redox reaction. Okay, so redox reaction क्या होता है? Redox reaction is a combination of reduction and oxidation. ये अलग अलग रिएक्शन. Oxidation is one half reaction
Reduction is another half reaction और दोनों मिलके जो होता है that is nothing but the redox reaction, which is a central theme of this chapter. तो इस चैप्टर के अंदर हम कई डिफरेंट टाइप्स के सेल्स डिस्कस करेंगे, कई डिफरेंट टाइप्स के मॉडर्न सेल्स की बात करेंगे. कौन सा भी सेल क्यों ना, दुनिया में कोई भी सेल्स क्यों ना, वो सारे सेल्स के अंदर रिएक्शंस यही रहेगा, that is redox reaction. That is you can say reduction and oxidation. यही उसके अंदर मेनली रहेगा, यही उसके अंदर मेनली रहेगा. So that is what we discussed here. That is you can say redox reaction. और let's have the one example of this redox reaction ताकि what is oxidation, what is reduction आपको समझ में आएगा. शायद आप में से कुछ लोग हैं जानते भी होंगे, फिर भी एक बार हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप रिएक्शन पढ़ते आए हो, that is Na plus Cl gives you NaCl. So this is the reaction जो आप बहुत बचपन से और बहुत सालों से आप इस रिएक्शन को जानते हो. Am I right? So hope so कि everyone knows this reaction very well. So that is you can say here Na plus Cl produces NaCl. So everyone knows this reaction. And this is nothing but the redox reaction. ये जो reaction है, this is nothing but the redox reaction. So redox reaction. अभी ये redox reaction के दो टाइप होते हैं. तो मतलब ये redox reaction can be classified as oxidation reduction. तो actually reaction होता कैसा है? This is Na gives you Na plus one electron is lost, and Cl gains one electron. So this is the Cl gains one electron to form Cl minus. और ये दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो देखिए this is Na plus Cl gives you Na plus Cl minus gives you NaCl. This is what happens. ये सिंपल रिएक्शन है, बट रिएक्शन का मैकेनिज्म इस तरह से. अभी आप में से काफी सारे बच्चे जानते हैं कि रिएक्शन सोडियम रिएक्ट with chlorine to form NaCl, that is nothing but the redox reaction. और sodium loses one electron, chlorine gains another electron and form Na plus and Cl minus, and we got this reaction NaCl. अभी इसके अंदर according to the rules or laws of oxidation reduction, what is oxidation? This reaction. See, this reaction is oxidation. This reaction is reduction, and this reaction is redox reaction. Okay, this reaction is a redox reaction. Now, why I am discussing this with you? Because this is the central theme of the chapter. This is very central theme of the chapter. Major here. This is the sodium which loses the electron. So loss of electron by any of the species or any of that is called as oxidation. Gain of electron by another species is called as reduction. So loss of electron by any of the species is called as oxidation. Gain of electron by any of the species is called as reduction. And oxidation and reduction always occurs simultaneously. Oxidation reduction always occurs simultaneously, and that's why this process is called as a redox reaction. This process is called as a redox reaction. So we got this redox reaction. It always happens whenever there is a one atom, ion, species, or molecule which loses the electron. At the same time, there should be some another atom, ion, or molecule which accepts the electron. So loss of electron and gain of electron is always a simultaneous process. And whatever the process, whichever the process in which there is a loss of electron, there is a gain of electron, that process must be called as a redox reaction. So this is the redox reaction what we get here. So this is one of the example of redox reaction. Each chapter के अंदर there are many cells what we are going to discuss, that is electrochemical cell and electrolytic cell. Both of the cells will be having this type of reaction, that is one of the atom is going to lose the electron, another species, another atom going to gain the electron. सारे इसमें यही रिएक्शन देखने हैं हम लोगों को. So half reaction will be of oxidation, another half reaction will be of the reduction, and the final reaction will be addition of this. So this is very simplest reaction what I have given for the better understanding of the topic. इस चैप्टर के अंदर थोड़े से और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखेंगे, लेकिन उसके अंदर यही होगा. One of the species will lose electron, another species will gain electron, and that will occur the redox reaction, because पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस ही हमारा redox reaction है. तो चाहे हमारा गैल्वेनिक सेल हो, चाहे हमारा जिंक कॉपर सेल हो, चाहे हमारा मर्क्यूरी सेल हो, चाहे हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, चाहे हमारा दूसरा कोई इलेक्ट्रोड हो, सारे इलेक्ट्रोड के अंदर किसी टाइप की रिएक्शन होंगे, that is oxidation reduction means redox reaction. So that is a very central theme of the chapter with which we start with this one. Level this. So that is the central theme of the chapter. Now let's move to some fundamental definitions of the chapter, some fundamental concept which we have to discuss here in this chapter. Okay, so let's move to that. Okay, अब देखिए सबसे पहले आता है that is you can say conductance.
conductance. So this conductance is also denoted by G, no doubt at all. In physics, you may have some different notation for this one. That is related with the conductance. What is this conductance? Conductance hota kya hai? This is very fundamental term. Again and again, what we are going to use here in this chapter for is conductance. Conductance is nothing but the charge transfer from one point to another point is called as conductance. So conductance is nothing but the charge transfer from one point to another point, and that is nothing but the conductance. अभी ये फिजिक्स में देखा है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर पूरा उसी के साथ डिवोटेड है, वहां पे आपने डिस्कस किया हुआ है. So we are dealing with this is nothing but the conductance. Conductance is nothing but the charge transfer from one point to another point is called as a conductance. उसे हम लोग conductance ऐसा कहते हैं. Whenever charge transfer occurs from one point to another point, that is called as a conductance. ठीक है. Now इसके डेफिनेशन हम और ज्यादा देखेंगे. कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये दो तीन डेफिनेशन डिस्कस करना है. बट उसके पहले ये थोड़ा सा कंडक्टेंस टर्म इन जनरल सेंस में हमें समझना है कि कंडक्टेंस इज नथिंग बट द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. ओके, सो दिस कंडक्टेंस इज ऑफ टू टाइप. ये कंडक्टेंस दो टाइप का होता है. दैट इज यू कैन से मेटालिक कंडक्टेंस. ओके, एंड दूसरा that is you can say electrolytic or ionic conductance. Okay, so these are the two types of this conductance. Conductance के दो टाइप बनते हैं. एक बनता है that is you can say metallic conductance, और दूसरा बनता है हमारा electrolytic conductance और also called as ionic conductance. अब ये क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? See, this is the metallic conductance. हम अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि metals are good conductors of heat and electricity. Metals are good conductors of heat and electricity. We know well. Now the thing is that whenever the charge transfer occurs from one point to another point with the help of electrons through the metal, then that process is called as metallic conductance. That is called as metallic conductance. Or whenever charge transfer occurs with the help of ions, that is called as you can say electrolytic or ionic conductance. So दोनों केस में both are nothing but the conductance. So what is conductance? We have seen over here. Conductance is a charge transfer. Conductance is nothing but the charge transfer. So whenever charge transfer occurs from one point to another point, that is called as you can say conductance. That is called as conductance. And this conductance is of two types: metallic conductance and electrolytic or ionic conductance. So what is this metallic conductance? So whenever charge transfer occurs with the help of electron in a metal from one point to another point, that is called metallic conductance. And this is the conductance. Charge transfer occurs with the help of we can say with the help of ions. That is called as ionic conductance. So hope everyone getting this. What is the conductance? Is there anyone who didn't got the definition? What is the conductance over here? Hope everyone got this. What is this conductance over here? Clear with this? Now the thing is that this here in electrochemistry we are concerned with this electrolytic conductance. We are not concerned with this metallic conductance, because this metallic conductance is nothing but the charge transfer with the help of electrons in a metal. और हम मेटल के अंदर यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर we are concerned with the chemical, we are concerned with the solution substances, and where here charge transfer occurs with the help of ions. Charge transfer occurs with the help of ions, and that is the electrolytic conductance what we discuss here in this chapter. Clear with this? Now let's go to the one thing. What is this solution? तभी देखिए, suppose this is the metal piece. अभी ये metal का piece हमारे साथ, और इस metal piece को हम लोग यहाँ पे अगर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज ट्रांसफर होगा, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज़ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज कॉल्ड एज करंट. यू कैन से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द current, and this flow of electron is the part of charge transfer from one point to another point. So if this charge transfer occurs with the help of electrons to the metal, that is called as metallic conductance. Okay, ये मेटल का पीस था इसलिए उसमें से हो गया. अभी हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल के साथ, केमिकल सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं. से फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है. वी हैव द कंटेनर इन व्हिच वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और NaCl के सॉल्यूशन से करंट पास होता है. कभी-कभी हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं कि घर के अंदर
बात करते समय, बातिंग करते समय करंट लगा और करंट लग के बंदा मर गया, इस टाइप की न्यूज हम लोग पढ़ते हैं. हाँ, the reason behind that कि water actually is a non-conductor of electricity. Pure water is a non-conductor of electricity. But हमारे घर के अंदर जो water आता है वो pure होता नहीं. Chemically pure means free from all the ions, not only biological agents. Okay, मतलब clean water और pure water इसमें फर्क है. So when we say about the chemically pure water, it consists of only H2O. That is a free from all the ions and everything. And this is not the case in case of our water what we have at home. तो हमारे घर में जो पानी आता है उसके अंदर काफी सारे आयंस होते हैं. इवन इट इज अ क्लोरिनेटेड वाटर, तो उसके अंदर क्लोरीन आयंस तो होते ही होते हैं, काफी सारे मेटल्स भी होते हैं. और इसलिए हमारे घर के अंदर का जो वाटर होता है दैट इज अ कंडक्टर. और हम अगर ऐसा करते हैं कि कंटेनर में लेते हैं वाटर और उसके अंदर थोड़ा सा NaCl डालते हैं और NaCl का सोल्यूशन बनाते हैं, सो दैट इज मोर मतलब इट हैज मोर कंडक्टेंस, हायर कंडक्टेंस यू कैन से सिंपली. द रीजन बिहाइंड दैट देयर कंडक्टेंस आकर विद द हेल्प ऑफ आयंस. पानी के अंदर जो आयंस है, सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है, उस आयन के कारण कंडक्टेंस ज्यादा होता है, और दैट इज नथिंग बट यू कैन से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस. सो हियर इन दिस चैप्टर we are mainly or morely dealing with this electrolytic conductance or ionic conductance, not with this metallic conductance, because metallic conductance is not a part of chemistry, that is a part of physics. तो फिजिक्स में जितना सारा आप करंट वगैरह सब डिस्कस करते हो उसके अंदर आप लोग मेटालिक कंडक्टेंस की बात करते हो, और केमिस्ट्री के अंदर जब हम डील करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर वी आर डीलिंग मेनली विद दिस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड आयनिक कंडक्टेंस, वेयर conductance occurs with the help of ions. Ions means ions, either it is a cations, either these are anions, either whatever them, which type of ions are there, but we are dealing mainly with the ions. That is what we can say a conductance. Clear with this? So so that is what we can say conductance. Clear with this? Now this conductance का हम देखते हैं conductance का जो formula है, conductance का formula होता है that is G is equal to I upon R. This is the formula of the conductance. Okay, so ये आपने देखा हुआ. So I upon R is a formula of the conductance. Okay, so sorry 1 upon reciprocal of resistance होता है 1 upon R, 1 upon R. तो conductance is reciprocal of resistance. ऐसा definition शायद आपने फिजिक्स में देखा हुआ है. So conductance is 1 upon R. That means conductance is reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance. And दूसरी भाषा में उसे define कर सकते हैं हम लोग. Conductance is directly proportional to cross-sectional area and inversely proportional to length of wire. This is another definition of conductance. So conductance has two definitions. Number one, conductance is reciprocal of resistance, or it is 1 upon R. So conductance is reciprocal of resistance is the first definition. Or another definition we can say conductance is directly proportional to cross-sectional area of the wire or inversely proportional to length of wire. तो आप देखिए ना कि इस इक्वेशन को हम सिंपली प्रूव कर सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, सपोज दिस इज द वायर, ये हमारा वायर, और इस वायर से करंट हमें पास करना है. तो होता क्या है ना कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा. तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड हियर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ऐसा होता है. सो लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा, और लेंथ जितना कम होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा, being it is inversely proportional to. तो inversely proportional होने के कारण we got this equation that the conductance is directly proportional to cross sectional area and conductance is inversely proportional to length of wire. So this is the definition what we get here for the conductance. So big learner conductance के दो definitions या दो formulae देखते हैं. पहला देखा हमने conductance is inversely proportional to resistance. Conductance is inversely proportional to resistance. या फिर दूसरा definition conductance is directly proportional to cross sectional area of the wire and inversely proportional to length of wire. इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो you can say G is equal to K A upon L, where this K is nothing but conductivity. It's very important term, that is K is conductivity. अभी देखिए इस चैप्टर के अंदर ये बहुत याद रखना है और काफी ठीक तरीके से याद रखना है कि conductance is a different term and conductivity is a different term. So this has to be remembered very well. When we say it is a conductance denoted by G. When we say it is a conductivity, it is denoted by K. That is K is a conductivity. So it's not the spelling mistake. What is conductance and what is conductivity? है ना? हम लोग बोलते हैं कि वही तो है वो. It's not like that. Conductance is totally different term and conductivity is totally different term. Resistance is totally different term and resistivity is totally different term. Okay. So
रेजिस्टेंस इसी से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। देखिए नाउ देयर इज अ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस की क्या बात कर सकते हैं, यही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। रेजिस्टेंस इनवर्सली मतलब रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ जी, दैट इज व्हाट वी कैन से हियर। ये भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से डिफाइन करना जाएंगे तो क्या होगा फिर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, लाइक दैट। सो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस लेस है, लाइक दैट। और क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, लाइक दैट। इस तरीके से होता है, इसके अपोजिट होता है वो, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड उसे सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L upon A. What is this rho? What is this rho? Rho is resistivity. Rho is resistivity. जैसा conductance gives the conductivity, उसी तरीके से resistance gives this resistivity. So conductance का definition देता है क्या कि it is reciprocal of resistance. उसी तरीके से resistance is reciprocal of conductance. या फिर resistance is directly proportional to length of wire and inversely proportional to cross sectional area, and this is nothing but you can say resistance. तो अभी देखिए इधर हम लोग ऐसा करते हैं कि L is equal to 1, A is equal to 1, ऐसा अगर लेते हैं वैल्यू पुट करते हैं, so it gets R is equal to rho. R is equal to rho. This is nothing, resistance is equal to resistivity. यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ऐसा करते हैं कि A is equal to 1, L is equal to 1, then G is equal to K, इस तरीके से मिलता है। so शायद दिखाई दे नहीं रहा आपको, यहाँ पे देखिए G is equal to K, G is equal to K कब मिल सकता है, जब हम लोग ऐसा लेते हैं कि A is equal to 1 और L is equal to 1, ये जो A इसका वैल्यू 1 लिया, L का वैल्यू 1 लिया, तो G is equal to K हम लोगों को मिल जाता है, G is equal to K। कंडक्टेंस is equal to conductivity, उसी तरीके से रेजिस्टेंस is equal to resistivity when there is a unit cube material। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब मटेरियल मतलब उसका लेंथ कितना है 1, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1, so the conductance of unit cube material is called as a conductivity and the resistance of unit cube material is called as a resistivity। मतलब यहाँ पर भी क्या होता है कि ये दोनों अगर 1 होंगे तो R is equal to rho, इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन मिल जाता है, R is equal to rho, इस तरीके से इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है। so this is very important thing that कि resistance is equal to resistivity and conductance is equal to conductivity when there is a unit cube material। unit cube material मतलब वायर है, इसका लेंथ 1 है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1, then that is called as यूनिट क्यूब मटेरियल and then उसका जो रेजिस्टेंस होगा that is equal to resistivity and उसका जो कंडक्टेंस होगा that is equal to conductivity। so कंडक्टेंस का डेफिनेशन अलग है, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन अलग है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अलग है, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन अलग है। so these are the fundamental terms what we have discussed here, till there are some fundamental definitions remain। tomorrow we'll discuss with some fundamental definitions and we'll enter into the second phase of the chapter। Hope so everyone got it. Till then, bye bye. See you tomorrow. Thank you very much.